So I welcome you all to UIS, and my name is Saurabh Pandey. Let's discuss about this important topic. Google is launching an artificial intelligence (AI) powered chatbot called Bard to rival ChatGPT. Bard will be used by a group of before being rolled out to the public in the coming weeks. Bard is built on Google's existing large language model Lambda, which one engineer described as being so human-like in its responses that he believed it was sentient. The tech giant also announced new AI tools for its current search engine. AI chatbots are designed to answer questions and find information. ChatGPT is the best-known example. They use what's on the internet as an enormous database of knowledge, although there are concerns that this can also include offensive material and disinformation. Bard seeks to combine the breadth of the world's knowledge with the power, intelligence, and creativity of our large language models. Google's AI services to be bold and responsible but did not elaborate on how Bard would be prevented from sharing harmful or abusive content. The platform will initially operate on a lightweight version of Lambda. Requiring less power so that more people can use it at once. Google's announcement follows wide speculation that Microsoft is about to bring the AI chatbot ChatGPT to its search engine Bing, following a multi-billion-dollar investment in the firm behind it, OpenAI. ChatGPT can answer questions and carry out requests in text form, based on information from the internet as it was in 2021. It can generate speeches, songs, marketing copy, news articles, and student essays. It is currently free for people to use, although it costs the firm a few pennies each time somebody does. OpenAI recently announced a subscription tier to complement free access. But the ultimate aim of chatbots lies in internet search, experts believe, replacing pages of web links with one definitive answer. AI can be helpful in these moments, synthesizing insights for questions where there's no one right answer, he wrote. Soon, we will see AI-powered features in search that distill complex information and multiple perspectives into easy-to-digest formats, so we can quickly understand the big picture and learn more from the web. So I hope ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब UIS चैनल। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। द हिंदू सेशन आपका सुबह 7 से 7:15 बजे के बीच में होता है। IAS एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जरूर से जुड़ें।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक में आपको क्लिक करना है। यू हैव टू पुट द कोड SPLIVE। आप ऑफलाइन के लिए जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन का बैच भी शुरू हो रहा है। आप जो डिफरेंट बैच कोर्सेस ऑनलाइन, वो भी उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। मेरे द्वारा भी कई सारे कोर्सेस आपके लाए गए हैं, चाहे वो जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का, जोग्राफी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का कोर्स हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है। ऐसे बहुत सारे जो कोर्सेस हैं वो आपके लिए लेकर आए गए हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन करें। अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हैं, बुकलेट्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ज़रूर से जुड़ें और सारे अपडेट के लिए UIS चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।